बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मुबीन शाह हैं, जो श्रीनगर के बिजनेसमैन भी हैं, आजकल तुर्की में राइश पजीर हैं। इनके साथ मिलकर ये समझना चाह रहे हैं कि जो भारत इस वक्त एक ग्लोबल नेटवर्क चला रहा है टारगेट किलिंग का, जिसे इंटरसेप्ट ने भी कोट किया, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की रिपोर्टिंग आती रही है और माजी में तो पाकिस्तान ने इस हवाले से एक डोजियर भी जमा करवाया था। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे भारत के ओवरऑल इमेज के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर? तो ये इन मामलात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इंटरसेप्ट ने रिसेंटली एक अपनी स्टोरी शाया की है, जो कि बॉम्ब शेल है इनफैक्ट, जिसमें वो बताता है कि दर्जन से जायद लोगों को टारगेट के जरिए से किलिंग करवाई गई है पाकिस्तान में, कराची में, पिंडी में, लाहौर में, आज़ाद कश्मीर में, जिसमें आज़ाद कश्मीर कश्मीरी लीडर्स भी हैं, जैश ए मोहम्मद से दाइश अपना दूसरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं तंजीमें, और उसके साथ साथ सिख लीडर्स जो हैं उनको भी टारगेट किलिंग की गई है। तो आप इस सारी डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान में तो इस पे चर्चा जरा कम हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनली रिनाउंड जो जर्नल है इंटरसेप्ट, उसने इस पे स्टोरी एक शाया कर दी है। देखिए सर, ये तो मतलब दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट इंडिया इज हमारे हिसाब से तो रोग स्टेट ही है, मतलब। एंड अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज साइलेंट एंड दे आर गेटिंग अवे विद इट। एंड अभी तो मतलब फाइनेंशियल टाइम्स में भी आया है, आज ही मैंने देखा फाइनेंशियल टाइम्स में भी आर्टिकल आया है कि वहां भी एक मतलब इन द यूएस दे हैव ट्राइड टू किल one Sikh leader, and it has been sort of stopped by the intervention of the American government. तो बात ये है कि as per the article also कि, and some analysts have also said that is it the announcement of India that India is so powerful now that it doesn't care about opinion of the world, and at the same time it is announcing itself to be a world power, because India feels that this is one of the signs of a world power, that they can do anything like without any repercussions or anything, it is at no cost to them. So this is very important. This is one aspect of it. That so, and the second aspect is that it is unfortunate that in Pakistan this is not being discussed as it should have been. Although I have got calls before this also from some of the Kashmiri people who have met me in Azad Kashmir and all that, that this is happening, and the Pakistan government is not taking any feasible action or visible action against such elements. मतलब तो इस आर्टिकल में भी लिखा है, and I saw another program which was done by Wajahat Khan, wherein the person who had written this, he was telling that कि कुछ elements हैं police forces जो who have been used by the Indian government to get these things done. लेकिन हमारी जो शाह साहब, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट तो इस तरह की भी आ रही है कि इसमें जो इलीगल अफगानिस्तान से लोग रहने वाले हैं पाकिस्तान में, वो पैसे लेके ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, और कुछ पुलिस एलिमेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। वजाद ने तो खैर आर्मी का नाम नहीं लिया, उसने कहा कि रेंजर्स के कुछ एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, रेंजर्स की, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है। जी जी, मतलब ये है कि मतलब I am not discounting the possibility of the Afghans, some of the Afghan elements, because India has been, very close to the Afghan intelligence previously. So, कुछ elements after the leaving of the Americans,
they must have, migrated to Pakistan without any, because they were not scrutinized or whatever it is. Exactly. And they might have been a party to it. I'm not excluding that possibility. लेकिन बात ये है कि हो रहा है, वरना हमारे को as a Kashmiri, I mean trying to understand कि as a Kashmiri, मतलब I have been of the view from the very beginning once I came out of Kashmir that हम Kashmiri, who are we? Who are we? Are we are we deemed Pakistani? If we are deemed Pakistanis, then who's our securities? Who is in charge of our security as such? तो मतलब अगर ये तो मतलब it is not, that means I am, as a Kashmiri, I am a Pakistani citizen if I am living in Pakistan, and it is the responsibility of the Pakistani state to safeguard me. तो उनके मतलब it has been targeted killing. It is not that it is a one एक आधा केस हो गया तो चलो जी आदमी बोलता है यार ये तकरीबन दर्जन के करीब लोगों की बातें आ रही हैं कि वो टारगेट किलिंग में मारे गए जी. Yes, and this is very very damaging for the Pakistani state itself as such. लेकिन इसका रिएक्शन आजाद कश्मीर में आपको या मकबूजा कश्मीर में नजर आएगा, जिस तरह से एक भारतीय कर्नल को भी टारगेट किया गया कि आपने हमारा जैश मोहम्मद का एक लीडर मारा तो उसके बदले में हमने आपके एक कर्नल को एसेसिनेट किया. देखिए सर, वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट. मतलब वो कहेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट व्हाट दैट लीड टू, मतलब ये है कि but in the process Indian state is not getting any, India will still getting away with all these things because in the world India तो मतलब कोई तो उनको नहीं कर रहा है ना, जैसे अभी कनाडा ने उनको शोर उठाया about लेकिन for killing Kashmiris nobody is asking any questions. मतलब is it because of अभी वो मतलब I was hearing वजाद साहब ने तो मतलब, although I do not agree to his nomenclature that jihadi elements. What is jihadi elements to do with Kashmiris? We are freedom fighters, whoever it is. Whether I am doing freedom fighting through my participation in conferences or Zoom calls, that means tomorrow I am also be then labeled as a jihadi element. लेकिन इतना शाह साहब वजाद को इतना रूम जरूर दे दें, क्योंकि वेस्ट में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी इस तरह की तो इस्तेमाल करेंगे जहां पे वो सरवाइव भी कर सकें. नहीं, टर्मिनोलॉजी तो ठीक है सर, लेकिन सवाल ये क्या होता है कि जब हम खुद ही नैरेटिव ऐसे बनाएंगे रिजल्ट क्या होगा. अभी देखिए हम जैसे हमास है इस वक्त, फॉर एग्जांपल हमास बोलता है इट वाज रनिंग अ स्टेट ऑफ, मतलब इन अ वे गाजा they were ruling it. They had won the elections, and on the other side they are telling that they are terrorists, they are this thing, they are that thing. ये creation of this creation. I am not saying, I am not supporting anything for that matter, but ये है कि we are fighting an occupation. और जब हम occupation को fight कर रहे हैं, how will we be considered like that? और इसका मतलब कि हमारे को कोई वारिस ही नहीं है, हमारे को कोई, हमारे लिए कोई फाइट ही नहीं करेगा. वो बोलेंगे ये एलिमेंट है, वो बोलेंगे दूसरा एलिमेंट है. इन द प्रोसेस इंडिया विल गेट अवे विद इट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड डॉक्टर साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है. ये पॉइंट जो है आपका, हमें नैरेटिव पे बड़ा हमें कॉन्शियसली काम करने की जरूरत है, और उसको इस तरह की टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कश्मीर काज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे. ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया. ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फ्रीडम फाइटर्स और द लीडर ऑफ द कश्मीर मूवमेंट. मुझे ये बताइए, आपने कनाडा का भी जिक्र किया, तो कनाडा भी आखिरकार खामोश हो गया ना. इतने बड़े लेवल पे बात उठी जहां पे I-5 भी इन्वॉल्व थी, उन्होंने डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस भी पेश किए, लेकिन आप देखते हैं दोबारा साइलेंस हो गई. यहां तक कि वो अमेरिका में भी टारगेट किलिंग के बारे में सोच रहे हैं, जिसको अमेरिका इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, उनकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और तंबीह कर रहे हैं सिख कम्युनिटी और लीडर्स को कि आप जरा केयरफुल रहिए. बरतानिया में 2 किलिंग्स हो चुकी हैं और इससे पहले कतर में हो चुका है. हुआ कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है
जो कि वजाहत ने भी सवाल उठाया था, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इसको टैकल करे, इस इशू को प्रॉपर तरीके से? नहीं, देखिए सर, वो नहीं है कि वेदर पाकिस्तान विल बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, बट the question is, as a state, Pakistan has to tell its narrative. It should not be afraid not to tell it. You see, for example, Canada was not afraid not to tell, although उनकी जो रिलेशनशिप इंडिया के साथ होगी बहुत फर्क पड़ गया, मतलब इन द सेंस प्रेजेंटली। तो ये तो एड ऑन हो जाता है ना। देखिए पाकिस्तान फैटफ में कैसे आ गया, because it was built up slowly by one country, then another country, then another country. The Indians were very active in that. Exactly, and वो तो किसी को तो करना है ना। मैं तो नहीं, as an individual I cannot do it. I can at the most speak somewhere or other, but states can do it. States can expose it. तो देखिए क्या है कि suppose जहाँ मैं आज बैठा हूँ, for example Turkey, they took cudgels with Saudi Arabia also when in their country a person was killed or assassinated, खजल तो लिए ना, उनके तो हालात खराब हुए, लेकिन they did not say that no, you can do it and get away with it. मेरा मतलब वो है कि अब पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करे, पाकिस्तान बोले ही नहीं कहीं, उसका मतलब थोड़ी है that means what does that give signal to us? मैं अगर यूं सवाल, शाह साहब अगर यूं सवाल करूं कि पाकिस्तान क्या करे, पॉलिसी ऑप्शन अगर आप दें 1 2 3 इस मामले को टैकल करने के लिए, क्योंकि फैटफ में तो खुद इंडिया का केस भी गया हुआ है अब। उनको अगर डोजर दिए हैं ऑलरेडी, they have to make it public, they have to make it public to the whole world that this is what is happening. Why should they be afraid? Why should they be defensive about it? For example, अगर इंडिया ने आज तक ये किया है, अभी तक तो वो जो आपका वो जो उन्होंने वो क्या नाम है उसका जो पकड़ा था फ्रॉम ईरान, कलभूषण यादव का, कलभूषण यादव, why to keep these things secret कि उसने क्या क्या किया है? डिटेल जरा निकालिए ना, पब्लिक को भी बता दीजिए, एक्सपोज कर लीजिए इंडिया को कि ये हुआ है। फिर छोड़िए, देखिए वर्ल्ड क्या करेगा। देखिए वर्ल्ड आज वर्ल्ड ऐसा है, पोजीशन है, Israel has been exposed in the world. Exactly. What they have done. NATO, the powers to be, let us say America, or they are trying to, camouflage whatever they have done. But बात ये है कि जब लोगों को बताया, people came to know. That is why जब तक आप नहीं बताएंगे वर्ल्ड को कि ये हो रहा है, यार ये कश्मीरी जो है बेचारे ऐसे हैं, they have already suffered, they have already doing, they are migrants into Pakistan. For example, Pakistan, we are not migrants into Azad Kashmir. It is our own place. Exactly. It is not that we are in. It is just like we are in Gaza in a way. In a way, for example, not exactly, but I can say I can make a comparison of the same thing, because it is our own area. We are there, and India comes in there and kills our Kashmiri brethren. How we will not accept it? डॉक्टर साहब, आपने इजराइल का इस वक्त जिक्र किया, इजराइल जिस तरह से एक्सपोज हुआ, इसका मतलब कि इजरायली जो टैक्टिक्स या मेथड जो है ऑक्यूपेशन का, वो नाकाम होते हुए नजर आ रहा है। दुनिया में उसका इमेज टार्निश हो गया है, आइसोलेट होता जा रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी पे है, जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कुशी कर रहा है। इंडिया वही मेथड कश्मीर के ऊपर अप्लाई करता है, और ये किताब जो द पैलेस्टाइन द लेबोरेटरी के अंदर मेंशन किया है जो स्कॉलर हैं सिडनी बेस्ड। आपको लगता है कि इंडिया का माइंडसेट क्या है, क्यों नहीं इसको समझ रहे कि अगर इजराइल फेल हुआ है तो ये भी फेल हो जाएंगे? सर 2019 से the model of India has been actually exposed in the way. हम तब से बता रहे हैं कि इंडिया का सेम मॉडल है, इंडिया ने सेम मॉडल। अब फर्क इतना ही है कि इजराइल बिकॉज ऑफ द हेल्प फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज इज ब्लैटेंट, वो डरता नहीं है, उन्होंने किया, ओपन भी किया। इंडिया वो उनका सिस्टम ही वैसा है कि दे आर डूइंग इट स्लोली, जब तक ये सारा सेम टू सेम है। कश्मीर में भी सेम पॉलिसी है, सेम मॉडल है, सेम एवरीथिंग है। हमने देखिए, फॉर अस एनी ह्यूमन बीइंग किल्ड इज फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अभी 14,000 लोग गाजा में ये मतलब इन्होंने मारे हैं। हमारे भी 1,50,000 लोग मारे हैं इंडिया ने। एग्जैक्टली। आस्ते 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 आस्ते
अगर टोटल करेंगे, मे बी आई एम नॉट सेइंग दैट, अगर टोटल करेंगे इतने इतने पैलेस्टीनियन नहीं मारे होंगे इन ऑल दीज इयर्स ऑफ 67 इयर्स, जितने इन्होंने 1990 से मारे हैं हमारे. बट दे हैव डन इट इन सच ए मैनर, except for certain massacres they have done, which was not, they came out in the open, but not to that extent जिन्होंने जैसे किए हैं, for example. और ये तो है नथिंग इन कंपैरिजन. तो अगर हम जम्मू का भी वो जेनोसाइड करेंगे उस वक्त का, जो पार्टीशन का, जो उन्होंने पार्टीशन का उसमें they gave it a signal of that this is because of partition, 400,000 people, then you can imagine how many people have been killed by India, and they have done. हमारा तो जेनोसाइड हुआ है, अब ये हमारे में स्लोली कर रहे हैं. ये जो इन्होंने आज गाजा में किया, सेम टू सेम मॉडल है सर, सेम टू सेम मॉडल. दिस इज देयर इज नो. मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर इजराइल नाकाम नजर आता है मिलिट्री फ्रंट के ऊपर, इंफॉर्मेशन के फ्रंट के ऊपर, इकोनॉमी के फ्रंट के ऊपर, लेकिन क्या इंडिया उससे लेसन नहीं लर्न करता? सर ये तो आप आज बोल रहे हैं ना, आज हम ये बोल रहे हैं. Because when Gaza, the Hamas people or the Palestinians reacted and made it an issue like this. नहीं तो just before this, नेतन्याहू तो गया वहां यूएन में, वहां तो अपना मैप दिखाया without the Palestine. वो तो सक्सेस बोल रहे थे. इंडिया ने तो बोल रहा कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है, तो उसमें तो पार्ट इजराइल भी है. That means what is it? It was that we are successful. Our model is successful. This is what we are going to do, and this is what they are telling the people in the world. कि जहाँ कश्मीर में डेवलपमेंट हो गई, वो हो गई, ये हो गई, because of all this. But the model is basically the same. अब फर्क इतना ही है, उसने इजराइल में फास्ट किया था, इन्होंने किया, ये स्लोली कर रहे हैं. तो इसमें डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में भी ले जाएंगे इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीक में दोबारा इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे. अगर आप 1, 2, 3 इसके इम्प्लीकेशंस बताते हैं साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर, क्या आएंगे? एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि नॉर्मल रिलेशन हो इंडिया के साथ, और इंडिया भी बजाहिर कहता है कि हम पीसफुल कंट्री हैं, गंगा की सिविलाइजेशन बड़ी पीसफुल नजर आती है, और फिर बाद में ये टारगेट किलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं. तो आपको लगता है कि इसके इम्प्लीकेशंस होंगे साउथ एशिया की सिक्योरिटी के ऊपर? सर अगर this is going to continue, there can certainly be no peace. If there is a peace, that will be peace of silence then. मतलब silence in the sense of the grave. वही होगा और कुछ नहीं होगा. And that will also signal that Pakistan has left the issue of Kashmir, and it has given up on this, and the Kashmiris will also feel the same. This is my one aspect. Another aspect is that, you see, whether Pakistan then supports Kashmir or not, but still Kashmiris will go on fighting, maybe at a smaller level, bigger level, depending on the situation. So, lekin peace will never be there. ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको एड्रेस करेंगे कि जिस तरह से आतिश फिशां फटा है फलस्तीन में बिकॉज ऑफ इजरायली पॉलिसी ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या यही पॉलिसी जो मेथड इंडिया ने अडॉप्ट किया है, क्या वहां पे भी इसी तरह का कोई आतिश फिशां फट सकता है? इस पे हम तफसीली इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गुफ्तगू करेंगे. आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी. नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके इम्प्लीकेशंस को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और क्या ये सिनारियो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी जो है इंसर्जेंसी दोबारा बड़े पावरफुल अंदाज से इरप्ट होगी. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज.